Very good morning, students. I hope you all are doing good in your studies. Today we are going to start our chapter 16, which is paying for travel. तो इस chapter के अंदर हम पढ़ेंगे that how we pay if we travel from one place to another. So let's discuss about this in this chapter. The name of our chapter is paying for travel, and the topics which we will discuss are types of vehicles used for traveling and paying for travel. So we need to travel from one place to another for various reasons such as work or business, holidays, pilgrimage, higher studies, etc. So today we use various modes of transport to go from one place to another. Some of these are driven by people while some are driven by the help of an engine. टाइप्स ऑफ व्हीकल्स जो हम यूज करते हैं फॉर ट्रैवलिंग वो है, सबसे पहले आता है प्राइवेट व्हीकल्स. तो जो व्हीकल्स हैं जो हम खुद ओन करते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइवेट व्हीकल्स. वी डू नॉट हैव टू पे टू ट्रेवल बाय देम. हमें उनसे ट्रेवल करने के लिए पे नहीं करना पड़ता. फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल, कार, स्कूटी, मोटरसाइकिल. नाउ पब्लिक व्हीकल कौन सी होती हैं? जो व्हीकल्स होती हैं जो हम लोग ओन नहीं करते उन्हें हम पब्लिक व्हीकल बोलते हैं. दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी. वी हैव टू पे टू ट्रेवल बाय देम यूजिंग बाइंग टिकट्स, जैसे एरोप्लेन, शिप, बस, टैक्सी, मेट्रो ट्रेन, ऑटो रिक्शा. However, whichever way we travel, whenever we may travel, it's very important to plan every step carefully. It is your activity which says prepare a bucket list of your dream destinations across the world which you want to visit in your lifetime. इसके अंदर आपको एक बकेट लिस्ट प्रिपेयर करनी है. यहाँ पे आपको वो प्लेस या वो मॉन्यूमेंट लिखने हैं जहाँ पे भी आप विजिट करना चाहते हो और कौन सी कंट्री में वो लोकेटेड है. नेक्स्ट इज पेइंग फॉर ट्रेवल. तो हम लोग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं. डिपेंड करता है कि हमें कितना फार ट्रेवल करना है एंड हाउ मच टाइम वी हैव टू फॉर द जर्नी एंड हाउ मच मनी वी कैन स्पेंड ऑन द जर्नी. तो हमें क्या करना होता है? हमें टिकट्स बाय करनी होती है टू ट्रेवल ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. फॉर बसेस वी कैन बाय टिकट वंस वी ब्रॉड इट. जो पब्लिक बसेस होती है उनके अंदर कंडक्टर्स होते हैं जहां से हम टिकट्स बाय कर सकते हैं. ट्रांसपोर्ट जैसे याच, शिप, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स, हमें वहां पे टिकट्स खरीदनी होती है इन एडवांस. वी कैन बुक ट्रेन टिकट्स फ्रॉम द टिकटिंग ऑफिस एट द रेलवे स्टेशन. Flight tickets are available at the airline office at airport. Ship tickets are available at different shipping agencies. In today's busy lifestyle, people do not have time to stand in queues at ticket counters. So हमारे पास बुकिंग ट्रेन, शिप, एयर टिकट्स जो हैं वो इंटरनेट पे भी अब बुक होनी स्टार्ट हो गई. हम पे कर सकते हैं टिकट्स के लिए यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड. वी कैन शो द प्रिंट आउट ऑफ द टिकट टू द चेकर व्हाइल ट्रेवलिंग. व्हेन वी ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेस, एक ही कंट्री के अंदर और टू अ फॉरेन लोकेशन, हम होटल्स के अंदर स्टे करते हैं, inns and resorts. We also need to pay money to stay in hotel rooms. पहले आता है करेंसी. करेंसी is the money which we pay for buying goods or services. Every country has its own currency in the form of coins and notes. हर कंट्री की अपनी खुद की करेंसी होती है नोट्स और कॉइन्स की फॉर्म में. कॉइन्स क्या होते हैं? कॉइन्स जो होते हैं वो मिंट्स लोकेटेड होते हैं इन मुंबई, नोएडा, कोलकाता एंड हैदराबाद. These days coins are made of steel and brass. Olden days में we use coins जो होते थे वो aluminium, gold और silver के होते थे. The notes are issued by a Reserve Bank of India (RBI). Coins जो होते हैं वो round और flat होते हैं. They have two sides. One side has its value and the year of minting marked on it, and the other side has the national emblem. In some coins, its value and the national emblem are on the same side. The smallest unit for money in country is paise. 100 पैसे मेक्स 1 रुपी. नाउ रुपी जो होती है वो करेंसी है इंडिया की. हम बोथ कॉइन्स एंड नोट्स यूज करते हैं फॉर डिफरेंट डिनोमिनेशंस एज मनी. डू यू नो इन एंशिएंट टाइम्स द कॉइन्स वर ऑफन मिंटेड विद द नेम्स एंड लाइकनेस ऑफ किंग्स. इट इज योर एक्टिविटी विच सेज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉइन इज न्यूमिस्मैटिक्स या फिर फिलेटली. एंड द नेक्स्ट question is which coins are not used in nowadays but were used earlier. तो हम यहाँ पे fill करेंगे. So the answer for first one is numismatics. And जो coins अब नहीं चलते हैं they are 1 rupee coin, penny coin and half rupee coin. Now moving forward, do you know in very olden times people used shells and precious stones like gems as currencies. Now currency symbol. All coins and notes have their own value in digits which is shown in the front side. The signature of the governor of RBI is present on every note.
जो वैल्यू होती है ऑफ नोट वो रिटन होती है इन मैनी languages on the note. The picture of Mahatma Gandhi can also be seen on each note. The currency note used these days belong to Mahatma Gandhi series and a watermark is added to prevent the circulation of fake currency. The watermark image होती है that can be seen only when light is passed through it. The security thread is a ribbon, thin ribbon woven into the note. It also prevents imitation यानी कि forgery of currency notes. तो ये जैसे हमारा एक नोट है, यहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एक इंटेग्रो प्रिंटिंग होती है, सिक्योरिटी थ्रेड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वाटर मार्क होता है जहाँ पे हम लाइट की मदद से गांधी जी की फोटो देख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, यहाँ पे एक लेटेंट इमेज होती है एंड आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिप होती है. हर करेंसी नोट में वो कैरी करता है नंबर यूनिक टू दैट नोट. इट कैन नॉट बी रिपीटेड फॉर एनी अदर नोट. These days जो people हैं वो प्रेफर करते हैं यूजिंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स फॉर पेमेंट्स. They avoid carrying currency notes for shopping and traveling. It is your grocery where travel means to go from one place to another, especially over a long distance. Transport means the action of carrying or taking people or goods from one place to another. Let's review the chapter. The vehicles which are owned by us are known as private vehicles. We need to buy tickets to travel on public transport. Flight tickets are available at the airline offices at airport. Currency is the money which we pay for buying goods and services. Coins are round and flat and have two sides. Smallest unit for money in our country is paise, and the security thread is a thin ribbon woven into the note. Let's finish the exercise. First is tick the correct option. Dash is a private transport, scooter. Dash is a money which we pay for buying goods or services, currency. In olden days, we used dash made of aluminium, gold and silver, coins. Smallest unit for money in our country is paise. Dash are made in mints located in Mumbai, Noida, Kolkata and Hyderabad. So the answer here is coins. Next is fill in the blanks. Dash tickets are available at the airline office at airport. So it is flight. Dash are the round and flat that have two sides, coins. Rupee is the currency of India. A dash is added to prevent the circulation of fake currency. So, watermark. Dash tickets are available at different shipping categories. Ship. Next is true false. The vehicles which are not owned by us are known as private vehicles. False. Public buses have conductors from whom we can buy tickets. True. Notes are issued by the Reserve Bank of India. True. People prefer using credit and debit cards for payment. True. Security thread in a thin ribbon woven into a note. True. So students, this was your chapter about paying for travel. I hope it is clear to you. Do revise all the terms and all the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.